और दोस्तों स्वागत है आप सबका। कहिए क्या हाल है आपका। आप सबको दीनमणि साथ में ऑफ कोर्स आरजे शमा एंड माइकल का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कारम, वरकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, निसंबुला। यस एंड हम जो लोग हैं ऑफ कोर्स वी आर कमिंग लाइव फ्रॉम फ्रीमोंट इन कैलिफोर्निया। फ्रीमोंट, यस, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया से हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। And we went there last week, but we are back in action this Saturday. And यहाँ का जो मौसम है, it's clearing up. दो तीन दिनों के बारिश के बाद, things are like pretty good. But first of all, Michael, welcome, namaskar, happy Saturday. Happy Saturday to you then, and happy Saturday to our live viewers. All right, thank you. And RJ Sharma, welcome, namaskar, happy Saturday आपको। हैप्पी सैटरडे आपको भी, एंड हैप्पी सैटरडे जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ ट्यून्ड इन है, लाइव हमें देख रहे हैं रूबरू। आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं अपने इस लाइव चैट पर। सो डू ट्यून इन एंड ड्रॉप इन योर फीडबैक्स या फिर अपने कमेंट्स या फिर क्वेश्चंस, जो है जिस भी टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं, विल श्योरली गेट बैक टू यू। या फिर यूं ही बस डेडिकेशन करना है आपको, या फिर अपना नाम आपको बस छोड़ना है हमारे पास कि यू आर विद अस। तो डू लेट अस नो। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे गैंग हैं हमारे साथ ट्यून्ड इन है, आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार। All right, thank you. And Salinder Singh, yes, you have just joined us. Hello, आपको नमस्कार. Spring is here, yes, and it's that time. I know, ठंड वगैरह के बाद में अभी भी ठंड है। Well, ठंड है अभी तक, and today is the first day of spring. Okay. See, that's why I always. And, hey, it's beautiful though. I have a jacket. Yes, we're talking about यहाँ पर यूएस की हम बात कर रहे हैं, and of course पिछले दिनों में Colorado में, there was a freeze out there, उससे पहले in Texas. So things are going on, weather changes and whatnot. And to our viewers out there, अगर आप फीजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, very warm welcome, नमस्कार, निसंबुल आप सभी लोगों को। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अगर आप है, इंडिया से है, या फिर पाकिस्तान, यहाँ यूएस, कनाडा से, a very warm welcome आप सभी लोगों का। You can just say hi, hello to all of us. और शो की शुरुआत हम करते हैं, थोड़ा सा कुछ हमारी जो यहाँ पर यूएस के बारे में कुछ बातें वगैरह है, पैंडेमिक वगैरह जो है, पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत जो कुछ चल रहा है, तो we'll just talk a little bit about that. फिलहाल के लिए एक छोटा सा जोक है, nothing like I always mention, my disclaimer is always, right? Nothing personal, nothing serious about jokes. It's just to make you laugh. आपके चेहरों पर हम मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक लिखने वाले ने, उन्होंने हद ही कर दी। एक बस के पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए बड़े होकर देसी शराब पिए। बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए बड़े होकर देसी शराब पिए। Imagine that, right? My God. You know what? I'm still trying to decipher उसका मतलब क्या होता है। माइकल, वो समझने में थोड़ी सी टाइम आपको लगेगी। I know, because maybe I'm a little dull over here, but then again, No, I still don't get it. ये इंडिया में, इंडिया की बात है, right? जहाँ पे or maybe I'm not too familiar with the Indian sense of humor. you are too ahead, Michael. आप सब वो सब humor जो they're too behind. और लोग बुरा ही मान जाते हैं ना, जो लोग शराब पीते हैं, आपको पता है, राइट? उसपे क्या उनको बीतती होगी ना, शराब जो लोग पीते हैं, माइकल। हम लोग तो बस कॉफी पी के जी रहे हैं। सो थैंक यू। तो क्या करें, हमारे जिंदगी में at least we can do the best out of coffee, right? Thank you. All right, so थोड़ी सी हम देखते हैं कि बॉलीवुड की जो अपडेट वगैरह है। शमा, I know there is lots of things going on, right? Yes, as I said, slowly theaters open हो रहे हैं, not only in Bollywood या फिर in Mumbai, but also in other countries also. और अब theatrical जो releases है ये आ रहे हैं, and you have watched रूही, जानवी कपूर, वरुण शर्मा और साथ में राजकुमार राव की movie. The combination was too good.
बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स है इन their own field. They have individually given us splendid hits. लेकिन शायद थिएटर रिलीज रूही के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, शायद थोड़ा जल्दबाजी हो गई. जो प्रमोशनल टीम है या मार्केटिंग टीम है, इन्होंने शायद सोचा होगा कि इतना हॉरिफिक स्टोरी है विद जानवी कपूर, विद राजकुमार राव, दी राजकुमार राव. सो उन्होंने सोचा होगा कि या दिस इज गोइंग टू हिट द ऑडियंस. लेकिन ऑडियंसेस को थिएटर्स तक ले जाना एक अलग बात है इन दिस पेंडेमिक और आफ्टर दिस पेंडेमिक और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. इवन दो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं, तो रूही जो कि 35 करोड़ बजट पर बनाई गई इज हैज बीन जस्ट एबल टू कलेक्ट अराउंड 17 करोड़. तो अभी भी इसका जो कलेक्शन है ये चल रहा है, मूवी चल रही है. तो धीरे धीरे इसका जो कलेक्शन है, एंड ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ अबाउट दिस मूवी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूही को 2 या 2.5 स्टार्स ही दिए गए हैं, उससे ज्यादा नहीं. और जैसे कि आपने भी ओनिया कहा डीन, एंड आई सेकंड दैट एब्सोल्युटली, कि शायद इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म रिलीज ही करना चाहिए था. If it was signed, it had signed a contract with the Jio and Netflix, तो Netflix के साथ ही इसको रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि it would have gotten back its money. और बहुत ही in just a few days अपना जो बजट है ये निकाल के शायद ये हिट हो जाता. तो चलिए, ये तो अब हो गई, अब तो रिलीज हो गया है. बट लेटर ऑन यू माइट सी रूही on the OTT platform, that is Netflix. और उससे हटके you are watching in theaters संदीप और पिंकी फरार, ये अर्जुन कपूर और साथ में प्रणीति चोपड़ा की मूवी है. प्रणीति चोपड़ा की एक और एक मूवी आई थी, द गर्ल ऑन द ट्रेन, विच वाज गुड. नाउ वी आर वाचिंग दिस वन. और संदीप और पिंकी फरार, ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई, 0.75 करोड़ ही अपने पहले दिन पर कमा पाई. बट लेट्स सी, दिस इज जस्ट द फर्स्ट डे. और उसके हटके देयर इज अ एक्शन मूवी रिलीज जो हुई है, दैट इज इमरान हाशमी और साथ में जॉन अब्राहम. और जॉन अब्राहम किसी भी मूवी में होते, एक्शन तो होना ही होना है. और इनका तो मार धाड़ का, अगर आपको पसंद है मार धाड़, एक्शन, ये सारी चीजें पसंद है आपको, तो यू हैव टू गो एंड वॉच द मूवी मुंबई सागा. इस मूवी ने पहले दिन पर 2.75 करोड़ कलेक्ट किया है. सो नॉट बैड फॉर दिस पेंडेमिक टाइम. तो स्लोली विल चेक आउट अराउंड नेक्स्ट वीक कि कौन सी मूवी हिट रही और कौन सी मूवी पिट गई बॉक्स ऑफिस पर. बट अदर देन दैट वी हैव डीन सम पीपल, जैसे कि रणबीर कपूर, नीतू कपूर के बेटे, ही हैज बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, ही इज टेकिंग क्वारंटीन, जिसकी वजह से ब्रह्मास्त्र की जो शूटिंग है थोड़ी डिले हो गई है. अब शायद इस मूवी को लेट दिसंबर तक रिलीज किया जाएगा, ये न्यूज आई है. एंड आलिया भट्ट हैज बीन saying that she is missing him, major missing. एक पिक्चर इन्होंने पोस्ट किया है. So we wish speedy recovery to रणबीर कपूर, because we want to see this movie ब्रह्मास्त्र, क्योंकि बहुत टाइम से ये मूवी न्यूज में है, बहुत टाइम से, right? Yeah, absolutely. So, yeah, something good will be coming up. Slowly, वही हम देख रहे हैं कि things are opening up. और यहाँ पर US की अगर बात करें, we just transiting into, लेकिन all those places, PG में मेरे ख्याल से, I think, things are getting back to normal. New Zealand में भी देखा जा रहा है. Hi, Surekha, joining us from New Zealand onto our show. Australia भी, I mean, I think the South Pacific, they're doing pretty good. In regards to whatever we are doing यहाँ पर US में, जो we have more than 530,000 people who have died with this virus की अगर हम बात करें. And yeah, we're changing from Bollywood into whatever's going on, हमारे जो latest यहाँ पे. And then we talked a little bit about जो एक ज़्यादा contagious disease जो है, and this is supposedly more deadly variant of the coronavirus which is spreading across the US. और हमारे जो health officers है, they are pretty worried. और कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, the B117, ये पहली बार स्पॉट किया गया था यूके में. And it's not only more easily transmitted, but it also appears to be more deadly.
और डॉक्टर एंथनी फाउची जो है उन्होंने सभी को वार्न किया है एंड फ्राइडे को and he has also mentioned that to the White House उनको कोरोना वायरस पर अपडेट दिया है. So this was first spotted in Colorado. यहीं पर like we mentioned last week ही यहाँ पर there's a freeze out there in Colorado. And so lots of things are going on. और डॉक्टर फाउची ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि एक स्टडी में ये शो किया गया है कि there is a 64% increased risk of death for people infected with B117 compared to those infected with the older so-called wild-type variant. And he showed that a second study that indicated a 61% higher risk of death with B117. So हम यहाँ पर यही कहेंगे माइकल, जो लोगों को मतलब vaccines वगैरह है मिलना है. I know, congratulations to you. You had your first vaccine, and now I think Monday को you are having your second. And congratulations for getting that and showing हमारे जो लोग हैं जो शायद हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर आपका चांस है आपको जाने का मौका है to get this vaccine, go get it done. Yeah, exactly. Why pass it up? I mean, अगर आपका समय है, I mean, you have the time. If you have made any appointments, make sure go through with it. मैंने तो पहला, my first was, I mean, I didn't feel anything. Was slow around for a couple of days. But मैंने सुना है जो second dose है, it has caused some reactions. But वो तो देखा जाएगा. You know what? That's beside the point. I have to. Mine's due on Monday, and I'll let you know after that. I know कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब there is no pain, no nothing, but कहावत भी है ना, there is no pain, no gain, right? So you're gonna do what you're gonna do, right? Yes, Yeah, absolutely. Hey, मुझे injections और vaccinations से कभी डर नहीं लगा. See, I never had any problem with that. Okay, so I'm not one of those squeamish guys. No. Yeah, I know. Shama got it easy, right? Shama. I don't like injections. Thank you very much. But if we are supposed to get it, we will definitely get it. I just don't like injection. I mean, किसी के भी शरीर में आप ये नोकीला चीज अगर आप पोक करेंगे तो वो मतलब वो पीड़ा तो देगा ही, obviously. I don't want it. Shama, I know exactly. There's some people who are absolutely deathly afraid of it. Okay, हमारे साथ एक व्यक्ति था जो काम कर रहा था ना, when I was in Fiji, right? And he was a grown-up guy, an elderly, मुझसे उम्र में शायद बड़ा भी होगा. Okay, he was deathly afraid of needles. Okay, तो हमारे जो कभी-कभी we used to have vaccinations and or injections, right? किसी कारणवश, so we all knew about that. And so इसको we used to take advantage of it. Okay, जो इससे आगे जो रहता था वो इतना मुंह बनाता था, it was definitely in great deal of pain. कई बार ये वहां से लाइन में से निकल के भाग गया. That's me. Yeah, hey, but just to take control, just to take care of this that's going on. US की अगर हम बात करें right here in United States of America, California में, we are in Fremont, San Francisco Bay Area में, and there are lots of places it has been opened up vaccinations के लिए. So make sure you do. We want to take control. Or US में, like I said, more than 530,000 people have died, and precautions वगैरह अपनाइए. I know there is lots of things that are being opened up, and Salendra ने कहा है, the second vaccine जो है, he's mentioned that it caused chills and fever, and I hear it from actually उन्होंने काफी लोगों से सुना है who got this, right? So thank you for sharing that, Selen, and to people out there, if you get that chance to go get this done, have it done. And also Anna Moore, यार, हमारे गांव से किसी ने हमें कमेंट किया है in Nangingi, Lambasa, हमारे जो पैदाइश है, I just have to tell you, it's in Nangingi, नाग मंदिर जहाँ से है, in Lambasa. Thank you so much, Nisambula. They're watching, from our little island Fiji से. It's good to see comments वगैरह आपने हमें भेजा है इसमें. Thank you so much. Lots of blessings आप सभी लोगों का. Growing up at a place, Michael,
जहां से आप है, I mean, it's amazing, man, amazing. Thank you. Hey, you know what? You have to think the technology today. कि आज हम Technology. यहाँ Yes. अमेरिका फ्रीमोंट कैलिफोर्निया में बैठे हुए हैं, and yet you are in visual contact with people back home. Hey, I mean, that's so nice of you to just connect it. I was actually thinking who is this person, comment kiya hua hai. And also to our people out there, New Zealand mein hai, Australia mein hai, and all those other islands, Canada se bhi hai. So we've been mentioning, I hope things are going well, after this hurricane jo तूफान यासा के कारण बहुत से लोगों की हानि हुई है. And I know that Actually, I've been following up. They've been receiving much of help, and लोग जो है खुद छोटे छोटे कम्युनिटी, छोटे छोटे जो ग्रुप्स है, ये फॉर्म करके भी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, which is actually good, कि आप within the community, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, you know better what you need. As soon as you get help, you form groups, you form a community, you get your friends, get your relatives, अपना कीजिए and then फिर औरों की help कीजिए. पहले अपना सुधारिए and then दूसरों का help कीजिए. So that is how you are going to get through this situation. Exactly. And Shama, you know very well, and we know कि हमारे कौम जो है, हमारे जो community है, that's how it is. Okay, we all get together and try and help each other. Okay, first and foremost, जहाँ भी हो सके, we'll get together and help, and that's how has been the case all along. I mean, always, Michael, and we talked about it. I mean, radio shows maybe. I mean, this is what we have been mentioning. We have, I mean, we have families, we have connections, we have friends. Our friends are much more than families. Exactly. अगर आपको मौका लगे उनको help करने के लिए, for surely do that, And जहाँ के आपके अड़ोसी पड़ोसी जो है, जहाँ से आप है, I've been always mentioning that. So please do take care of that. And hopefully we will, आगे चल के कमलेश, who is the ratepayers, लंबासा ratepayers association के secretary हैं, उनसे भी और भी कुछ बातें होंगी. नरेश, he's in Australia. I know he did a few things. लोगों को वहाँ पर लंबासा में मदद देने के लिए, बाढ़ के पानी से जो लोग पीड़ित हुए हैं. So I hope, I know हमारे जो Fiji वाले हैं, they're resilient people because, very often, most of the year, we get these hurricane and whatnot. And we get back up and start and running. But I know एक time ऐसे होता है, Michael, एक time ऐसे आता है जहाँ पे things become just out of control, right? But we have to, we have to fight it and help people out there. I mean, that's what I'm saying. So please. Exactly. And Dean, बहुत सारे लोग इस साल पर, इस टाइम पर ओलंपिक गेम्स को लुक फॉरवर्ड करते हैं. But I was just reading this news जहाँ पर ओलंपिक गेम्स अब पेंडेमिक के कारण से उस कंट्री में अलाउ नहीं किया जाएगा लोगों को. और ऑलमोस्ट 600,000 जो टिकट्स है ये वापस रिफंड किए जाएंगे. So there you go, the games, ओलंपिक गेम्स मोस्ट प्रोबेबली शायद वर्चुअल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका जो कवरेज है ये हो. सो यू विल बी एबल टू वॉच इट एट द कंफर्ट ऑफ योर होम्स. पता नहीं कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, बट इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स वाचिंग ओलंपिक गेम्स, आई नो फिजी में तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एंड अदर कंट्रीज आल्सो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस. तो अब इसका तो पता नहीं कैसे इसका होगा ट्रांसमिशन, बट राइट नाउ द कंट्री में, मतलब जापान में एंटर करने का ये अलाउड नहीं है किसी बाहर के स्पेक्टेटर्स को. Yep. So well, it'll be, commercially it's not going to be a profitable situation, but then again, hey, the games must go on, right? True. It's just like the show must go on, the games must go on. Must go on, must go on. And I know दिन हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, forgot to mention ये जो रिप जीन्स वाला था जो अभी चल रहा है फैशन में, and I think it's trending on social media. #ripped jeans हर कोई पोस्ट कर रहा है, and not only in Mumbai or in India, अब ये पूरे दुनिया भर में लोग कर रहे हैं. They're wearing cut jeans or ripped jeans and they're posting it out. So अगर आप aware नहीं है, so let me just highlight you कि एक
जो उत्तराखंड के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ये अपने भाषण में ये बात कही थी कि लड़कियां जो रिप्ड जीन्स पहनती हैं उनका कल्चर अच्छा नहीं होता, वो अच्छी हाउस होल्ड नहीं चला सकती और वो अच्छी लड़कियां नहीं होती, मतलब उनके कल्चर अच्छे नहीं होते, वो नेक्स्ट लीडर्स नहीं बन सकते। ही कमेंटेड ऑन थिंग्स लाइक दिस एंड जैसे ही इन्होंने ऐसा किया तो नाविया नवेली नंदा, इफ यू नो हर, शी इज अमिताभ बच्चन की पोती, इन्होंने तुरंत ही कहा, ट्वीट किया कि यू चेंज योर मेंटेलिटी बिफोर चेंजिंग आवर क्लोथिंग। तो अब जया बच्चन ने भी स्ट्राइक बैक किया है एंड वी ऑल नो व्हेन जया बच्चन गेट्स इनटू समथिंग लाइक दिस तो कैसा होता है। तो जया बच्चन ने इस कैबिनेट मिनिस्टर को, उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर को सीधे सीधे जवाब दिया कि आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं वहां से आपको जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट, क्योंकि आप जो बोलते हैं इट इज फॉलोड बाय पीपल who are our general public, the youths of today listen to you। मतलब इसीलिए हेट क्राइम्स टुवर्ड्स वुमेन बढ़ते हैं, क्योंकि आप जैसे मिनिस्टर्स यहाँ बैठ के ऐसी पेसिमिस्टिक थॉट रखते हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं एंड यू पास इट टू योर चिल्ड्रन, यू पास इट टू योर नेक्स्ट जनरेशन। और उन्होंने कहा है कि दिस इज वेरी पैथेटिक और ये बंद होना चाहिए एंड एक्शंस शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस मिनिस्टर। Absolutely. Exactly. You know, इनका ख्यालात क्या है? And you know what? Especially if you think, man, come to present. Get out of the ancient time that you are from. God damn it. I mean, yeah, the things are there. लोग अभी भी चलो, I mean, it's fashionable. शायद I mean, जिन कितने एक्टर्स जो है, लेट अलोन जो बॉयज है, मेन है, कितने मेन जो है रिप जीन्स पहनते हैं, उनके जीन्स तो बहुत ज्यादा फटे होते हैं, ज्यादा ही रिप्ड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे रिप्ड होते हैं। कुछ लोग तो हिप से नीचे ही पहनते हैं जीन्स को, एकदम नीचे करके पहनते हैं। वो सारी बातें उनको दिखाई नहीं दी, उनको दिखाई दिया कि लड़कियां रिप जीन्स पहनती है। ये इनका छोटा दिमाग है, छोटी सोच है। Okay, that's exactly what it is. So what can you do about it? Nothing. They need to change. Yeah, absolutely, Michael. Clothing has nothing to do with your culture, your tradition, exactly, or anything. Absolutely, I agree with that. पहन के भी एक लड़की मिनी स्कर्ट पहन के अगर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही है, it doesn't mean कि मिनी स्कर्ट के कारण से उसका प्रेयर करने का या भगवान उसकी प्रार्थना नहीं स्वीकार करेगा। I'm with you 100%. Okay, इनका ख्यालात खराब है. That's what it is. I mean, these people are bloody nuts. Yeah, this is going to cause a lot of crime against women again. ये बहुत because hey, I think the people are a little more sensible than that. Okay, people समझते हैं. Yeah, you know what? इनका पुराना विचार है, ancient विचार है. So what can you do? I just hope he's kicked out of the ministry. yeah, he doesn't belong there. He needs to be in some nut house. Or maybe he wanted some publicity, that's why, you say something like this, you get that, just like our, well, he got a lot of hate mail, I'm sure. अभी जैसे यहाँ पर भी देखा जाए, the हमारे जो Asian community वाले हैं, after this pandemic, hate की अगर हम बात कर रहे हैं, right, some kind of, and it was amplified by our previous president, and this has gotten onto so much hate against, because they were thinking, अरे ये इन लोगों के जरिए ये flu हुआ है. I mean, this virus came on, right? I mean, it happened somewhere. How are these people responsible, right? They are not responsible. I mean, जिसको करना था, जिन लोगों ने जो responsible थे, एक पूरा साल बीत गया है इस बात को, ये होकर खत्म हो गया, कितने लोग गुजर गए इस चीज से, millions of people have died. Now you wanna go and blame people? आपको क्या पता किसने कुछ किया था? आपको तो पता nobody did it purposefully, yaar. Yeah. This thing happened, okay? These things evolved. It's a virus. And this is 8 people died. हमारे Asian community वाले Atlanta, Georgia में, these guys just goes out and shoots these people, and like we were talking on our radio show, he 45 minutes, it took him 45 minutes to go from one place to the other, और उस बीच में
there was this other adult entertainment, locations. He didn't go there. With whatever some sort No, of he was targeting the Asian establishments. That's what it was, right? yeah. And if this is not hate, then what it is, right? I mean, in And आपने क्या कहा था वो पुलिस ने क्या कहा है इसके बारे में उनका फीडबैक था sheriff, yeah, the sheriff guy, he said, Yeah, the guy had what a bad day. उस sheriff को पकड़ के पीटना चाहिए. So you have a bad day, you pick up a gun and you just and go shoot people. Target it on somebody. You go push somebody off the cliff. It's really crazy. We wanna, show love to our Asian community. जहाँ कहीं पर भी दुनिया में आप जहाँ कहीं पर भी are like human beings. Treat human beings. Yeah, Asians are not virus. They are not a virus. Asians are not a virus. Get that through your head. They are not responsible for this. Everyone, every individual जिनको हो रहा है ये virus, they are responsible for it themselves. हम खुद precautions नहीं लेंगे, हमें होगा ये virus. It's right, exactly. out there. And it's the politicians. They are the ones who just try to. And you know what? All this started with the previous idiot who was in the White House. Okay, उसने हमेशा always called China flu, Kung flu. I mean, you know what? Coming from a president of the United States, this kind of language, can you believe it? Yeah, I mean, he just, there was no bottom to his going low, Michael. So exactly, words that come out of people's mouth exactly this thing just relates to whatever happened with the rib jeans situation, and this is what President Trump did. He initiated this hate in people before he left, that it is a Chinese flu, it is a this flu, it came from them, and he stopped many of the Chinese products, TikTok and all that. So that he created that hatred in our people, No, I mean that's true because he instigated it. He did it, and he's responsible for this. So people, हम लोगों के कहेंगे, I mean, you should face consequences in regards to whatever, your actions, your words, and whatnot. But he almost got away with lots of things. So we just leave on that note. Thank you, जितने भी viewers हमारे साथ आप जुड़े हैं. बाद में भी आप जुड़ेंगे. Which questions, comments वगैरह है. And Salen, thank you for all your comments. And like he mentioned, Steve Jobs also, being the Google के, the CEO, he used to wear ripped jeans as well. Yeah, and for me, I mean, though I don't like it, but hey, I have nothing against you or whoever wearing ripped jeans. So I wear ripped jeans. I love jeans, wearing ripped jeans. So there you go. Michael, thank you so much for joining, and we will be hopefully back here next week as well. And well, glad to be here, then. And you know what? Hey, at least gives me a chance to vent myself. Okay. And, we have some healthy discussions, and if the people who are viewing us and listening to us, you have any comments, do put it in the feedback, and we will get back to you. Live हम जितना हो सकते हैं आपसे रूबरू होते हैं. Otherwise, we'll get back to you when we are offline, right? या फिर वापस हम आएंगे तो आप फिर से rejoin कर सकते हैं. All right, so thank you so much, and also do not forget to join us अगर आप हमारे रेडियो जिंदगी चैनल को सुनते हैं 1170 AM right here in California, San Francisco, San Jose area में 1170 AM. You can also download our app, Radio Zindagi app, and you can listen to us. हमारे जो shows है it's Tuesday to Thursdays 4 to 5 PM, Fridays 6 to 7, Saturdays 12 to 1, and then one के बाद में we join you on the Facebook Live. And once again, thank you. Take care of yourself and each other. Namaskar, namaste, and Nisamode. Namaste.